Hi, buddies. Welcome to episode 8 of Anubhav. This time we have Priyanshi Choksi. इनके लिए मैं एक छोटा सा मुहावरा बोलना चाहूंगा. Jack of all trade is a master of none, but oftentimes is better than a master of one. So yes, Miss Priyanshi is a chartered accountant and tax lawyer. She has completed her LLM from NYU School of Law. Along with that, she is a founder. She runs a firm known as Beyond the Degree. Other than that, she's a radio jockey, a sports enthusiast, national level swimmer, and avid squash player. So hi Priyanshi, welcome to the show. Hi, Sajid. Thank you so much for having me, and hi to everyone who is going to be listening to this. Thank you so much for being here, Priyanshi. So for all our students out there, we want to understand कि आप कहाँ हो life में, what are you doing, and इतना सब कुछ करने के बाद, what is it that is actually getting you money at home? Well, that's a lot of questions, but to start off with, मैं बॉम्बे से हूँ. I was actually born and brought up in Bombay. और मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, so I'm going to be talking in English too. बट हाँ, आई स्टार्टेड ऑफ विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी. उसके बाद मैंने लॉ किया एंड आई रियलाइज कि आई एक्चुअली वांटेड टू कंबाइन बोथ माय डिग्रीज. इसलिए आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टैक्स लॉयर. बहुत सारे लोग जब टैक्स सुनते हैं तो दे गेट रियली intimidated and they don't really want to get into this field. So इसलिए मैंने सोचा कि I should make my niche in this field only because not a lot of people like to build in this field. So that's it, that's where I am. फिर मैंने decide किया कि I really need some international exposure because I've been in Bombay all my life. इसलिए I decided to do my masters in New York. New York is very similar to Bombay, इसलिए मुझे वो experience बहुत ही पसंद आया. And in terms of just getting that whole master's experience, I think it was really necessary. I really needed to get out of Bombay. So that is it about my personal profile, academic profile. इसके अलावा एक्चुअली मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, which is the reason why I started my initiative called Beyond the Degree. Through Beyond the Degree, मैं मेरे co-founder, मेरी team, we help young students, young entrepreneurs like you कि हम लोग कैसे पूरा career space navigate करेंगे, how to build your career, how to build your startup. And that's actually why I decided to interact with Seth also and met him. क्योंकि our whole aim through this conversation, through the startup, Seth's aim is also to reach as many students as he can and share experiences, share knowledge. So yeah, that's where I am in terms of what is getting me money. I don't know. मुझे लगता है कि मैं actually बहुत confused हूँ with the amount of things that I've actually done. पता ही नहीं कि what I really want to do in the future. So if someone asks me this question, मुझे ऐसे लगता है कि I really don't have an answer. But It's good. It's for good. now, It's good. yeah, plan is to help people like you all and at the same time make money by being a lawyer. Yeah, I can understand. It's all right. I mean, all of us are confused at some point of time. I mean, when we started with CBC, even I was very confused about what needs to be done. So I got a mentor, and that mentor helped me out. So I think the answer, long story short, is that we need a mentor to guide us through. So coming back to the topic, Priyanshi, so how does your day-to-day functioning look like? I mean, आप पूरा दिन क्या करते हो as a tax lawyer? मतलब सुबह do you have to go to court or fight cases, or is it a corporate job? What is it? I mean, I'm sure students will be happy to know about it. So actually, मेरा job is like a mix of everything. So my parents are chartered accountants. मेरे parents भी tax करते हैं, तो we actually have a firm in Bombay and Pan India. मैं actually मेरी office में ही बैठी हूँ अभी. But it's like a mix of a corporate job and going to court. मैं usually in the mornings 5 बजे तक I either go to court या फिर मैं tax lawyer हूँ, इसलिए ट्राइब्यूनल्स में जाती हूँ, टैक्स ट्राइब्यूनल्स या फिर ऑफिसर्स, अपील ऑफिसर्स को मिलने जाती हूँ. तो यूजली माई होल डे गोज इन दैट. उसके बाद आई कम टू ऑफिस एंड आई जस्ट ओवरसी एंड सुपरवाइज everything that is going on at office. I work on advisory,
क्लाइंट्स को कुछ भी स्ट्रक्चरिंग से काम चाहिए, स्टार्टअप कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी, एनीथिंग, आई हेल्प देम विद दैट, एंड ऑफ कोर्स माय टीम आल्सो रियली हेल्प्स मी. So yeah, that's how my usual day looks like. But Okay. the more exciting part of my day is actually ki, I really like to play sports and exercise. So whether it's in the morning or in the evening, I have to exercise or I have to swim for at least 1 hour. So Wow. in addition to all this, I like to do that, and I like to do sessions like this where I meet new people. मुझे नए लोग मिलते हैं. I get to talk to people like Seth Jeet. उनके experience की सीखती हूँ, and I like to work on and build on my startup also. Wow, wow, wow. Incredible, Priyanshi. Thank you so much for saying that. I mean, it's insightful. प्रियांशी मतलब जो स्टूडेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, आई एम श्योर उनको ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा होगा सीए एंड लॉयर का. फर्स्ट ऑफ ऑल सीए बनना खुद में इतना डिफिकल्ट टास्क है, फिर यू हैव टू बी अ लॉयर एज वेल, एंड यू हैव वेरी स्मार्टली अमेलगमेटेड द टू एंड बिकेम अ टैक्स लॉयर. उसमें डे टू डे फंक्शनिंग में यू गेट टू वर्क ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोफेशन, राइट? So, what skills does one person need अगर उसको इस particular field में रहना है? मतलब, do you have to be very good at maths, or do you need to be very good with public speaking? What is it that helps you in this particular profession? So first things first, मुझे पता नहीं, that why I decided to do CA and law, क्योंकि मैं 7 साल पढ़ी हूँ and it's not been वेरी वेरी इजी. और सब लोग को पता ही है कि सी एंड लॉ बोथ आर वेरी डिफिकल्ट फील्ड्स. और उसके बाद आई वेंट अब्रॉड टू डू माई मास्टर्स ऑल्सो. पर जोक्स अपार्ट, एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, मेन थिंग तो किसी भी फील्ड के लिए क्या चाहिए, यू रियली नीड डेडिकेशन. अगर इफ आई हैड स्टार्टेड ऑफ और आई हैड डिसाइडेड कि बीच में ही कि बस हो गई पढ़ाई, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू टू स्टडी फर्दर, then I wouldn't have been able to do both my degrees. So I think you Hmm. really need dedication, you need to have a lot of focus, and you have to be willing to work hard. अगर काम नहीं करोगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, no matter how much you try, how much you rely on, like नहीं नसीब में है तो आ जाएगा, वो सब बोलने की चीज़ें हैं. You have to work for True, it. true. So these are 3 things that are very very important. पर अगर हम टेक्निकल स्किल्स देखें तो आई थिंक कि मैं बिलीव करती हूँ कि टेक्निकल स्किल्स कैन ऑलवेज बी वर्कड ऑन ओवर टाइम, स्पेशली अगर तुम किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं सीए हूँ पर आई हेटेड मैथ्स, और मुझे नंबर्स से काम करना पसंद ही नहीं था. Oh, पर wow. स्टिल आई एक्चुअली वर्कड ऑन इट, क्योंकि चॉइस ही नहीं थी. सीए करना है, सीए बनना है, तो आई हैव टू वर्क ऑन नंबर्स. दैट्स Yeah. इन अ सिंपल वे. अगर लॉ करना है तो यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू शुड हैव गुड स्पीकिंग स्किल्स. पर ऐसा नहीं है कि इफ यू डोंट हैव इट यू कैन नॉट गेट इनटू द प्रोफेशन. यू नीड टू बिल्ड Okay. ऑन इट ओवर. तो यूजुअली जस्ट इन जनरल आई फील कि तुम्हारे जो एंसिलरी स्किल्स है या फिर एंसिलरी क्वालिटीज़ है, लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्किंग हार्ड, बीइंग वेरी वेरी पैशनेट अबाउट द थिंग्स दैट यू वांट टू डू, बीइंग They overtake. डेडिकेटेड, all those things exactly they count more than your technical skills. अभी मैं ऑफिस में बैठी हूँ पर आई एम नॉट गुड एट एवरीथिंग, राइट? बट my Understood. team will build on one thing, another team will help me build on another thing. तो वो So that's technical very skills. important point. I mean, sorry to cut you off because Yeah, I no wanted to worries. actually point this particular part of the conversation. Because right from our school age, क्या सिखाया जाता है? We are always taught being competitive. कि first आना है, second आना है, third आना है. But as soon as Exactly. you graduate, it's all about teamwork. I mean, you have to rely on other people for your weaknesses. उनकी strength आपकी weakness होती है तो कोई issue नहीं है. At the end of the day, ball needs to keep rolling, right? So ये बहुत important एक point है जो आजकल के youngsters को समझ आना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने fellow mates को push down करोगे तो आप successful होगे, या अगर वो successful होंगे तो आप नहीं होगे. You guys can become successful together because after your graduation in the real life you need support. And more than that, actually कि you also have to have the ability कि तुम लोग अच्छे से criticism लो, because professional fields are not like school कि जहाँ teacher ने कुछ कह दिया and it's okay. At the end of the day, professional fields में there are going to be people you're going to be meeting
अलग अलग types of clients, you're going to be meeting different types of people. So you should have the ability to take criticism well, कि अगर कोई बोले कि you can improvise here, तुम इधर ज्यादा अच्छा कर सकती हो, you should take it well कि ठीक है, I should actually work towards that and improve. ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बोल दिया कि मेरा काम अच्छा नहीं है, so that means I just give up and be like कि नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है. Yes, yes, completely agreed. Completely agreed. So, Priyanshi, why did you choose to do your masters? क्या हुआ पूरा बैचलर्स में पूरा अच्छे से नहीं समझ आया था कि सोचा मास्टर्स किया या because I really want to help out the youngsters who are planning to do their masters and they are doing it for the wrong reasons. They are doing it because they are not able to find jobs. So parents को चुप करने के लिए 2 साल और buy कर रहे हैं. But what is the reason why should शादी नहीं people do करनी their है. masters? हाँ या शादी नहीं करनी है very very शादी नहीं important करनी point. है. No, but so actually, अगर if I'm very honest, अगर मैं सच बोलूँ तो I did my masters क्योंकि मैंने CA किया था, लॉ किया था, but बॉम्बे में और in general इंडिया में you don't get that whole university experience जो बोलते हैं. Like you don't get to stay on campus, you don't get to experience that whole life कि मैं campus पे रह रही हूँ, मैं college events में participate कर रही हूँ, college activities कर रही हूँ, I'm meeting people from all across the country या फिर all across the world. तो इसलिए मैं Exposure is गई very थी. important, yes. Exposure is very important और मैं इसीलिए गई थी कि I really wanted that experience. मुझे education की ज़रूरत नहीं थी. After getting like CA and law degrees, I really didn't need to do my masters, and this is in general for everyone कि once you get any sort of education here, अगर undergraduate degree है, bachelor degree है, masters की actually ज़रूरत नहीं है. You don't नहीं. need a master Exactly, ताकि जॉब exactly. मिले. Your main thing is कि experience your तुम कैसा सोचते हो, the चाहे way कितने you भी पैसों में नौकरी मिल जाए ले लेनी चाहिए क्योंकि इस वक्त एक्सपीरियंस से इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं है. आप पढ़ाई करोगे 2 साल और लगा दोगे उसके बाद भी कुछ होना नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली. सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट ऑफ अर्ली एंड यू स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दैट एक्सपीरियंस. exactly. और मेन थिंग इज कि इफ यू रियली वांट टू बी गुड इन व्हाट यू डू, तुम लोग इंडिया में तो वीव बिन इन इंडिया, हम लोग इंडिया में काम किए हैं, we've had gotten experience in India. पर अगर if you really want to grow, and I realized this after going there कि अगर तुम्हें सच्ची में grow करना है then you have to meet people from different countries क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं. Everyone has a different approach, and if you really want to be a good professional, मैं professional field में हूँ, या फिर if you want to be a good businessman, तुम्हें business को international लेना है, you want to have an international startup, you have to know how people in the world think, वो कैसे सोचते हैं, and you can only get that by going there. और एक और चीज़ actually, I had stayed in Bombay all my life. उधर जाके I really realized कि what it means to be independent, to earn on your own, to have a life of your own. तो वो सारी चीज़ें भी like become very very important, more in terms of तुम्हारी personal growth, not professional growth but personal growth. I mean, जो लोग इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं ले सकते ये सारी चीज़ें आप नेशनल एक्सपोजर में भी कर सकते हो. बिकॉज आई ऑल्सो वेंट टू बैंगलोर फ्रॉम देहरादून. इन बैंगलोर सब कुछ पर्सनली सब कुछ खुद करना पड़ा. आई वॉज मीटिंग पीपल फ्रॉम very different cultures. Because I'm a Punjabi, I was meeting South Indian people, and Priyanshi, you will be amazed to know that my best friends were South Indians, and मेरे North Indian से वहाँ जाके बनी ही नहीं क्योंकि उनका culture मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. So I guess this can resonate for all those people out there जिनके पास मान लो अगर foreign country नहीं भी जा पा रहे हैं, national भी जा रहे हैं, you can travel to different states and explore and get that exposure that you need. So Priyanshi, tell me one thing. I mean, how is life abroad? मतलब कैसा है लाइफ? कहने के लिए कहते हैं कि वो बाहर पढ़ने गया है व्यक्ति, but how difficult it is to sustain your life and कैसे करते हैं मैनेज वहाँ पे? Honestly, life abroad is very very tough. हम लोग इंडिया में we are completely spoiled. Yes. We have a lot of facilities, we have a lot of services. We can get things हमें जब भी चाहिए, we can actually work towards things and get it. So yeah, I think in India हमारी life is very very easy, and also कि इंडिया में घर है,
So वो that Yeah. also makes a huge difference. But Yeah. going abroad is, completely different. I would say in a good and bad way. Good way इसलिए, क्योंकि you learn to be independent, you learn to live on your own, you have good and bad experiences, but you have to do everything on your own. You learn from your experiences also on your own. Like there is तुम्हारे friends nahi hai to to come and comfort you. Family is not there if और anything bad happens. You have to like grow आसान भाषा yourself. में है मतलब अपना बर्तन खुद धोने हैं कपड़े हाँ, खुद धोने हैं लॉन्ड्री सब करनी कुछ है, खुद सब करना कुछ है करना यस है, खाना खुद सब कुछ खुद बनाना है। करना आई डोंट इवन नो हाउ टू कुक, तो सब है कुछ या खुद ही करना सो यहाँ है। पे तो 7-8 हज़ार रुपए में यू गेट मेड फुल टाइम और वरना 2-2.5 बैचलर्स तो 2-2.5 हज़ार पे खर्चते हैं और उनकी 3 वक्त की रोटी बना देते हैं वहां पे ऐसा कोई सिस्टम एग्जैक्टली। नहीं है वहां पे यू हैव टू मेक योर फूड योरसेल्फ सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन योर लाइफ बट इन द अब्रॉड गुड लाइफ पार्ट एक्चुअली इज कि जस्ट लाइक हम लोग सब अकेले जाते हैं फॉर मास्टर्स, ऑल ऑफ अस गो ऑन आवर ओन, so we meet also people who are all coming on their own. या No one is coming with friends or family. So what really happens is तुम लोग सबके साथ interact करते हो and ultimately you build bonds that actually last a lifetime. कि I was staying in the student housing. मैं मेरे यूनिवर्सिटी के बहुत ही पास रह रही थी एक बिल्डिंग में जहाँ सब स्टूडेंट्स रह रहे थे। तो वी एक्चुअली गॉट सो मच टाइम कि एक दूसरे को ज़्यादा मिले, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो, साथ में पढ़े, साथ में प्रोजेक्ट्स करें। इस तरह वी मेड सो मेनी फ्रेंड्स, प्लस एट द सेम टाइम हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखे। सो या आई थिंक दैट वाज, एंड वी वेंट थ्रू ऑल एक्सपीरियंसेस, या बुरे अच्छे एवरीथिंग टुगेदर। सो आई थिंक दैट रियली मेड अ ह्यूज डिफरेंस। इसलिए आई एम ऑल्सो planning to go back just for about 2 months, to work in New Oh, York, wow. just Very, to very get that nice. international experience. Ki finally, I understand how professionals in New York work, ताकि I can bring everything back to India to beyond the degree my startup, and then help people like you Yeah, based on yeah, how to work internationally, how to build your profile internationally, or simply how to be like a global professional, as yeah. I We like to we would say. love to partner with you, Yeah. Priyanshi, on that. All our international study and work abroad work, we'll be happy to work out a mechanism and help out students like you are helping. So that's great. That brings us to the end of the session. I'll quickly ask you some questions, and I want one word to one line answer for the same. Are you ready? Oh, I'm ready. Yeah. Okay. So, what is the best advice for students? I think just be very passionate about what you're doing. हिंदी में कहते हैं ना, जो भी करो पूरा जान लगा के करो। आई नो इट्स वेरी फिल्मी, बट जस्ट बी वेरी वेरी बट ये पैशनेट। सच यही है मतलब क्योंकि जो एक बार पा लेता है उसको यही समझ आता है कि यही चीज है विद वर्क्स आउट एट द एंड ऑफ द डे या एग्जैक्टली। या या सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वर्स्ट एडवाइस एनीबॉडी कैन गिव टू अ स्टूडेंट कि आई थिंक फॉलो अ कन्वेंशनल करियर। फॉर एग्जाम्पल सीए ही बनो, लॉयर ही बनो, डॉक्टर ही बनो, इंजीनियर ही बनो। नॉट एट ऑल। अगर तुम्हें यू लाइक टू राइट, तो राइटर बनो, स्टार्ट योर ओन ब्लॉग। इफ यू आर क्रिएटिव, इन्फ्लुएंसर बनो। नाउ डेज सो मेनी पीपल वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स। डू कि जस्ट डू समथिंग जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। ऐसा ना करो कि मेरे सब फ्रेंड्स सीए कर रहे हैं इसलिए मुझे सीए करना है, या फिर सीए बहुत पैसे कमाते हैं इसलिए मुझे सीए करना है। हाँ दैट्स तो रियली दैट रॉन्ग। इज कमिंग फ्रॉम अ सीए आई मीन दैट इज मोर इम्पोर्टेंट है कि जो ऑलरेडी कन्वेंशनल रूट पास कर चुका है वो ये बात बोल रहा है सो ऑब्वियसली इट मींस अ लॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियांशी if there is a law that could be made for students what law would that be Everyone has to come up with one startup idea. आई थिंक मुझे स्टार्टअप्स के साथ काम करना और स्टार्टअप आइडियाज सुनना बहुत ही पसंद है, बिकॉज आई रियली थिंक कि हमारी जनरेशन या फिर ऑल द यंगर जनरेशन ऐसे है कि एवरी वन हैज़ ब्रिलियंट ब्रिलियंट आइडियाज, पर सिर्फ टाइम नहीं है या फिर रिसोर्सेज नहीं है टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया। इसलिए आई वुड मेक अ लॉ, yes एवरी वन हैज़ टू कम अप विथ वन आइडिया, एंड इफ इट्स रियली गुड, you don't know if you will be the next Tesla or you will be the next Apple. yes You Yeah, never know. you know, Priyanshi, I mean, right now I'm helping a student build a brand. We are building agri-business, simple mushroom production plant.
कुछ ज्यादा फैंसी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे अगर ग्रेजुएशन के बाद भी मान लो 15,000 रुपये मिल रहे हैं या 20,000 रुपये की सैलरी मिल रही है, तो वो बिजनेस छोटा भी हो उसको कर भी वो आराम से 5-6 लाख रुपए साल का कमा लेता है। तो इट्स नेवर अबाउट बिल्डिंग ह्यूज बिजनेसेस, क्योंकि जो जिस तरीके के बच्चे आजकल हैं, अगर क्रिएटिव भी हैं, इवन इफ दे आर बिल्डिंग स्मॉल बिजनेसेस, दे आर becoming independent of their time. They are their own gods. I mean, they don't have to do a lot of things. So Right. मतलब ग्राउंड लेवल पे जाकर इफ यू एक्चुअली लुक एट ऑल दोस थिंग्स, बहुत ज्यादा क्रिएटिव आइडिया भी नहीं चाहिए है, सिंपल सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट चाहिए। सो हाँ, ये लॉ तो मैं भी बनवाना चाहूंगा। आई विद यू ऑन दैट। ठीक है। And सो like दैट, basically a या good प्लीज। way to do like simple things, या फिर just something कि मेरे पास एक आइडिया है पर किसी और ने वो आइडिया एग्जीक्यूट नहीं किया है क्योंकि या people are scared या फिर उन्हें लगता है कि that idea will not work. You take it. You take that idea and like build on it. या सो लास्ट क्वेश्चन, if you become student for a day, क्या करोगे आप? How would you like to spend your day? So this is a very very confusing question क्योंकि I have a lot of things that I would like to do as a You have only student. 24 hours. Yeah, just 24 hours, but lots of things to do. But because I worked और फिर मैं पिछले last year में actually I was a student. I think one thing that I would like to do is of course like meet other students and just sit and like talk. I don't know if this even sounds exciting or interesting, but I just want to like network. I want to meet other Understood. students. मुझे I want to learn from them. I want to learn from their experiences, good, bad, जो भी है. And at the same time, like I want to party with them. I want to exchange different cultures, and I want to like also enjoy together. So learn and enjoy together. I think I just want to sit and meet people all day, like meet Understood. different people, and I really But like that's doing actually that. very good. I mean, for somebody who likes to talk to people, they get to understand different cultures. I mean, that exposure that you were talking about, I can see why that exposure thing is important for you also. क्योंकि at the end of the day, what you want is कि आप grow करो, and sometimes you learn from other people's experiences. So Exactly, that, especially agar if two people are in the same field, like Sajid, the way you and yeah, me connect, yeah, we would have never thought of any synergy agar if we hadn't interacted. So yes, I think true, talking can actually build a lot of yes. startups together एक और एक also. 11 होते हैं. Yeah, My father-in-law exactly. always says that. So Exactly. और एक yeah, और चीज actually that I just want to say out here कि nowadays in general बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि we want to go for a master's abroad or we want to actually study abroad. But to be very honest, I feel like Indian education, especially तुम्हारे IITs, your ISB, business schools in India, they're very very good. So if you actually want the experience that I'm talking about, then you can also literally study in India में ही रहो. Like आजकल yeah, मैं I was in the US, most foreigners also want to invest in India. So I think the key is to finally being in India. इसलिए मैं भी ultimately I decided कि I want to come back to India. I want to build on my startup beyond the degree और मुझे finally through my experience I want to share the same knowledge with others so that they can build and grow their ideas. so And as a I think that you're doing something similar too. yeah, so So as a matter of fact, I that's mean, I really was cool. also in Dubai when I planned that I have to get back to India and I have to do this thing for the students, because I also understood that charity begins at home, and if we really want to Exactly. improve the lives of students, we need to start from where we began. Or if we bring that kind of resources, that support that people at Harvard, NYU have, I mean, think about the kind of impact that you'll be able to create. I mean, I can get goosebumps with such an impact. So I am really working towards it, and I hope that us together can help students bridge that gap between education and corporate world. So thank you so much, Priyanshi. On that That's note, I it. think we would like to conclude today's session. And thank you so much for being on this show. No, thank you so much, Satjeet, for really having me on this show. I think we Gen Zs and millennials really have to help each other out, especially when it comes to
really building on like great new but simple ideas. So True. yeah, thank you so much actually for having me too, and I really look forward to having some synergies with you and connecting with you on the great ideas that we want to build on. Same here. Same here, Priyanshi. Thank you so much.